Good morning to all my dear students. Today here in the business studies lecture we are starting with the warehousing business services. Okay, we have completed with the insurance services. Now today in this lecture we will study warehousing services as well as transportation services. I think transportation services is very easiest topic ever. Okay, so before moving towards transportation, here we will start with warehousing. See, what is warehousing? The bulk in a bulk quantity when a businessman stores his goods, okay, in the warehouse. Okay, that is what warehousing concept. Warehousing refers to the storage of goods and consists of all those activities which are connected with the storage and preserving of goods. What does it mean? Some goods requires that particular type of atmosphere, the temperature level should be in a particular manner, in a particular proper level. Okay, so all those things will be provided by such warehousing, and at the same time packaging, loading and unloading of goods, all those facilities also warehouse keepers provides. It is a means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with storing and preserving of goods. स्टोरेज मीन्स सिर्फ रखना गुड्स, एंड प्रिजर्विंग मतलब क्या, वो गुड्स को अच्छी तरह से ब्रांड न्यू एज इट इज़ टिका कर रखना. ओके, दैट इज़ व्हाट प्रिजर्वेशन. ओके, so from time to time the production till the time of consumption, where we keep all those goods of bulk quantity in the warehouse. Okay, because not necessary as and when the goods will produce, and at the same time they will be in a market for the consumption. Okay, it requires some time. Example of umbrella we produced in the month of January February because मेरा umbrella बनाने का business है. But when I am going to start for the selling of or for the consumption purpose, when I am going to provide that number of umbrellas into market in the rainy season, or before the rainy season I will start to sell off in the market. But before that I need to keep it in a storehouse or warehouse, and at the same time in a preservative manner. What does it mean? Properly हमें packing करके रखना पड़ेगा. So this facility will be provided by warehousing. Definition they have given: a warehouse is defined as an establishment for, एक establishment एक ऐसी जगह बनाई है फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, जहाँ से हम गुड्स क्या कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और जब चाहे वो गुड्स वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वेयर हाउस. फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस वी विल स्टडी. सी, स्टोरेज बेसिक फंक्शन तो यही है कि वेयर वी कैन कीप आवर गुड्स of bulk quantity. If you will say, ma'am, our fridge is also one type of warehouse, so no, because we never keep all the number of bulk quantity of things in our fridge, refrigerator, so उसको तो हम नहीं बोल सकते warehouse. Warehouse provides you a bulk quantity of storage. So this is the basic function of warehousing. Surplus commodities which are not needed immediately in the market, that can be stored in warehouse. They can be supplied as and when the needed by the customers, that is in the market. So market में जब भी वो particular चीज़ की कमी है, so and at the same time when that particular product is in a demand by the market, by the customers, so at that time the provider will take out those bulk quantity of products from warehouse. Next is price stabilization. Warehouses play an important role in the process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. What does it mean? अभी दिवाली चला गया. ओके, दिवाली में सभी लोगों ने कंदील लगाए होंगे, क्रैकर्स पटाखे फोड़े होंगे, येस और नो. सो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर द होल ईयर. अगर पूरे साल भर तक मिलता तो ये सीजनल बिजनेस के लिए सीजनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सो ऑफकोर्स उनकी प्राइस क्या रहती, कम रहती. इफ़ you will get all those products for the whole season, for the whole year, but some of the things, some products you get for that particular season only, and that is why in the market businessman can stabilize the price of such product, जो कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा भाव में भी बिक सकता है at a higher price. Yes or no? So all these things can be possible just because whenever the market will be in a demand, at that time, at that moment they can
provide such product in the market. In the warehouses, usually large stock of goods is kept. Whenever there is a shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply difference. Okay, these things also happens in the market. क्या हो जाता है market में अगर if there is a heavy shortage of any product, so in that case there might be chances that a single सेलर अगर मार्केट में खड़ा रहेगा, प्याज सब किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक के पास है, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा भाव में बिक सकता है. येस और नो. सो ऐसे नहीं होना चाहिए. इसीलिए क्या होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं वेयर यू कैन कंटिन्यूसली स्टोर एंड कंटिन्यूसली कीप ऑन सप्लाइंग ऑल द गुड्स इन द मार्केट. All of you clear? So all this price stabilization and seasonal product के लिए एक particular price level को maintain करने का एक तरीका किसकी वजह से मिल गया है, warehouses की वजह से. Next is risk bearing. When the goods are stored in the warehouses, they are exposed in many risks in the form of theft, then deterioration, fire, etc. What does it mean? Some of the impact, some factors are there in the surroundings of that particular warehouse or that particular where you have stored all those goods, bulk quantity of goods. तो उसके surrounding में there are number of factors and risks are available, and वो सारे risk हमने सीखे हैं. फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, द रिस्क ऑफ फायर. मरीन इंश्योरेंस में द रिस्क ऑफ ट्रांजिट. ओके, एंड कोल्यूजन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन. सो सच रिस्क कैन बी रिमूव्ड बाय हैविंग such warehouses. Warehouses are constructed in a such a way that they minimize the risk. A warehouse keeper has to take the reasonable care of goods and safeguard them against the various types of risk. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. Now, so what does it mean? If I have suppose I have stored a bulk quantity of goods in one warehouse, okay, and I am giving them a rent for what purpose? Because they are carrying my bulk quantity of goods for a certain period of time. So in the exchange of that they are getting rent. And अगर मेरे गुड्स को कुछ हो जाता है, if it gets lost, it gets stolen or damaged, so such warehouse keeper will be liable for the payment of compensation. So all these risks can be removed just due to warehouses. Next is financing. Loan can be raised from the warehouse keeper or from financial institutions against the goods stored by the owner. I am one businessman and I have bulk quantity of products available in my warehouse, and in the exchange of that, based on that particular guarantee, I can get loan from bank or any other financial institution. So here warehouse में अगर मैं मेरी बड़ी जगह पर वेयर हाउस में बड़ी क्वांटिटी के मेरे गुड्स रख सकती हूँ, तो वही गुड्स का मैं इस्तेमाल क्यों कर सकती हूँ, एज अ फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी टू माई बैंक, के अगर मैंने पैसा अगर नहीं चुकाया आपका, सो यू कैन सेल आउट माई बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ मार्केट रेट फ्रॉम योर एंड. Okay, so goods act as an security, that is guarantee, for the warehouse keeper or for financial institutions. In this manner, warehousing acts as a source of finance for the businessman for meeting business operations. Okay, in the domestic level, what we can do, हम अपने क्या करते हैं, ज्वेलरी जो होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, we can mortgage those ज्वेलरी, that is हम क्या कर सकते हैं, उनको गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं. सो सेम बिजनेसमैन भी किसको गिरवी रख सकता है, to the goods which has been stored in the warehouse in a bulk quantity. Next is grading and packing. Now what is that grading and packing? See, number of fruits अगर हम रख सकते हैं वेयर हाउस में,
कुछ जो अनदर फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हम स्टोरेज के लिए कहाँ पर रख सकते हैं, इन द वेयर हाउस. सो ऑल दोज गुड्स एंड सम पैकेजिंग वाले गुड्स होते हैं एंड सम गुड्स आर कंसिडर्ड एज वेजीज, फ्रूट्स एक्सेट्रा. सो इनका भी क्या होता है, ग्रेडिंग किया जाता है. ए ग्रेड वाले अलग साइड में, बी ग्रेड वाले अलग, सी ग्रेड वाले अलग. दैट इज़ व्हाट क्वालिटी वाइज डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्ट को. सो दैट थिंग इज ग्रेडिंग. एंड पैकिंग मीन्स व्हाट, सब आप सबको पता है, मार्केट में गुड्स जाने के पहले उसे क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली पैकेट में पैक करना पड़ता है. सो दिस थिंग्स नाउ डेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड्स टू द businessman. See, warehouses nowadays provide the facility of packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in convenient size as per the instructions of owner. तो owner के instructions के हिसाब से पैकिंग भी करके दे सकते हैं. कौन, वेयर हाउस कीपर्स. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. warehouses can provide transportation facility to the bulk depositor. ओके, जो उनके पास गुड्स रखते हैं. सपोज आई एम वन बिजनेसमैन एंड आई एम depositing my goods in that warehouse, I am storing my goods in that warehouse. So as and when I will require my goods to be connect or to be ready in the market, so at that time warehouse से लेकर मार्केट एरिया तक मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके देना और फैक्ट्री में से वेयरहाउस तक मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके देना. दिस फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय वेयरहाउस. See, it collects goods from the place of production and also send goods to the place of delivery on the request of owner. Next is टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. ये इसके लिए मैंने अम्ब्रेला का भी एग्जांपल दिया था. टाइम अम्ब्रेला क्रिएट्स, दैट इज़ व्हाट वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी. एज एंड व्हेन द टाइम विल अराइव, एट दैट टाइम ओनली, टिल देन यू कैन store your goods in warehouse, and whenever that time will arrive, at that time only they will provide your goods to the market for the final consumption. So this is what the time and place utility. Place utility means what, it is not necessary. अगर मम्मी ने आपको बोला कि जाओ 1 kg शुगर लेकर आओ, तो आप फैक्ट्री में जाओगे शुगर के? नो, यू विल, where you will go, you will go to the nearest retail grocery shop. ओके, तो वहाँ तक दिस इज़ व्हाट प्लेस यूटिलिटी. तो फैक्ट्री से लेकर रिटेल शॉप तक का जो सफ़र था वो किसकी वजह से कंप्लीट हो गया है, वेयर हाउस की वजह से. बिकॉज वेयर हाउस में बल्क क्वांटिटी होता है एंड दैट बल्क क्वांटिटी इन अ शॉर्ट मैनर दे डिस्पैच टू द वेरियस रिटेल सेक्टर्स. Warehouses create time utility by preserving goods till they are demanded, and it also creates place utility by providing the goods at the place, where they are required. Now moving towards next, प्रोसेसिंग. नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? गुड्स को कुछ भी क्या करके देना, प्रोसेस्ड करके देना. फॉर एग्जांपल फ्रूट से सब कच्चे आम रखे हैं, उसको क्या करना है, अच्छे से पका कर मार्केट में सेल आउट करना है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज नेक्स्ट इज मिल्क है, तो मिल्क को प्रॉपरली पास्चराइज्ड करके पैक करना है. दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग. सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम इन अ फॉर्म दे आर प्रोड्यूस. ओके, कच्चा माल हम नहीं लेते, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करके वो मार्केट में सेल आउट करेंगे, तो ही जनरल पब्लिक उसको क्या करेगी, परचेस करेगी. वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में कुछ, ऑल दोज प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स होते हैं, पैडी इज पॉलिश्ड, फ्रूट्स आर रिपन एक्सेट्रा. So sometimes warehouses undertake such activities on behalf of owners. Okay, so all those were some of the functions of warehousing. Now moving towards next, transportation service. See, transportation में उन्होंने क्या क्या दिया है, बस दिया है, ट्रक दिया है, शिप, कार, एरोप्लेन etc., trains etc. So what are those? All those are means of transport. Okay, modes of transport which we can use. See, in India, transport plays an important role in the nation's economy. After 1991, development of infrastructure within the country has progressed at a rapid pace. Why after 1991? Because in the 1991 our government have launched
new LPG policy, that is liberalization, privatization and globalization. Under this, the transportation facility played an important role, and today there are different modes of transport used such as land, water, air, etc. Okay, number of transportation facilities we are utilizing. Now meaning क्या है? See, transportation is a movement of people, not only people, movement of animal, goods from one location to another location, or it can be defined as a means of carrying goods and people from one place to another place. येस और नो. अभी दिवाली वेकेशन चला गया, आप सब लोग यहाँ वहाँ अपने गांव गए होंगे, अपने नेटिव प्लेस पर गए होंगे. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सी, रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? रोड्स आर मीन्स दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द surface of the land. It provides all over connectivity in any terrain as compared to other modes of transport. So this is one of the most strongest mode of transport we can say. Why? Because roads are connected everywhere, from the village to the remote area to the district level to the state highways to the international highways to the national highways etc. Okay, so this is what road transport means. Various means of transports are used अंडर रोड ट्रांसपोर्ट सच एज बुलक कार्ट, ये तो बहुत ही पुराना हो गया, अभी विलेजेस में ही यूज़ किया जाता है. साइकिल्स, रिक्शास, बसेस, कार्स एक्सेट्रा. और आपको इससे ज़्यादा और जो पता होगा रोड पे चलता है, ऑल दोज ट्रांसपोर्ट कवर्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्ट. दस बस नॉट, it is bus rapid transit system. That is what it has been introduced in many states to improve public transport. मतलब remote area तक बस को लेकर जाना. This is what bus rapid transit. India has a network of village roads, district roads, state highways, etc. Okay. In India, Ministry of Road Transport and Highways looks after the development of surface transport throughout the country. कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं पर मिला तो आपको उसका फुल फॉर्म आना चाहिए. सो दिस इज व्हाट रोड ट्रांसपोर्ट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रेल ट्रांसपोर्ट. अभी रेल ट्रांसपोर्ट भी सबको पता है. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय वे ऑफ रोड. इट इज़ वेरी मच रिस्की एंड एट द सेम टाइम वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन नेचर. अगर आपको साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक लेके जाने वाली कोई बस होगी एंड एट द सेम टाइम ट्रेन होगी, तो क्या आप प्रेफर करोगे ज़्यादा? ऑफकोर्स रेल ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल इनफ. सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइन्स थ्रू ट्रेन्स इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट. It occupies an important place in the land transport system of our country and the most dependable modes of transport to carry goods and passengers over long distance. Underline this. Most preferable क्यों है? Because of long distance. It connects to the long distance. But remote area पर रेल ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड है क्या? अभी तक नहीं. बट मोस्ट प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसको माना जाता है? रेल ट्रांसपोर्ट को. इज दैट क्लियर? In India, Ministry of Railway looks after the development of rail transport throughout the country. Indian Railway runs various types of trains like passenger train, mail express and cargo और good train. मतलब जो मालगाड़ी रहती है वो भी इंडिया में अवेलेबल है. आपने तो बचपन से देखा होगा. ओके, सम पॉपुलर ट्रेन्स लाइक राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर some of the express which are especially introduced by our government to make it popularized towards the tourist sector. एंड एट द सेम टाइम कुछ जो बड़े बड़े एरियाज़ है जहाँ तक लोगों का आना जाना बहुत बड़ी तादाद में रहता है, सो उनके लिए ये सब ट्रेन्स बनाई गई है. ओके, नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज ऑल्सो रन सम लग्जरी ट्रेन्स सच एज पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, रामायणा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस
टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज़्म। ओके, इनमें से बहुत सारे नाम आपने सुने भी नहीं होंगे या फिर सुने भी होंगे शायद से, आपने ये सब ट्रेन से शायद से ट्रैवलिंग भी किया होगा। ओके, वाई? बिकॉज अगर आप टूर पे जाओ तो दिस स्पेशल ट्रेन्स आर ऑल्सो अलाउड एंड सम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे प्रोवाइड्स in such train. So this is what rail transport. There is less chances of risk of accident in the rail transport, whereas in road transport number of chances of accidents are there. Okay, so this rail transport is not risky enough. नेक्स्ट इज़ वॉट? एयर ट्रांसपोर्ट। ये भी आप सबको पता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द रेल टू मूव people or passengers and some goods from one country to another country. Okay, so in that case air transport is very much easy mode of transport, okay, to shift some passenger and for the movement of heavy goods and materials, and at the same time for the defense area also this type of transport is very much useful and very much quick in nature. It requires very much less time. Okay, so it is not time consuming enough. Air transport carries the goods and passengers through airways by using different aircrafts like passenger aircrafts, cargo aircrafts and helicopters etc. Cargo aircrafts किसके लिए होते हैं? For the transportation of goods and another defense related material. This is the fastest mode of transport, but it does not provide door-to-door service. Yes, door-to-door service कौन देता है वाला? Only and only road transport. Okay, in that bus transportation facility provides you door-to-door service, rickshaws, bus, etc. So this is what fastest and at the same time costly mode of transport, we can say. In a hilly or mountainous areas where other modes of transport is not accessible, air transport is important and convenient. इसके लिए helicopters भी use किए जाते हैं for the hilly areas, to reach up to the hilly areas in a fastest way. Air transport is also suitable mode in case of emergency like war, मेडिकल, नेचुरल कैलेमिटीज़, रेस्क्यू ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। ड्यूरिंग द फ्लड कंडीशन नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड्स देयर रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विसेज। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट इन अ फिक्स्ड एयर रूट। ओके, उनके जो एयर रूट्स होते हैं वो भी फिक्स्ड रहते हैं, ऐसे ही नहीं हवा में चलाए तो फिर कहीं भी चलाओ। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. Various national and international public sector and private sector airways companies are giving services on domestic as well as international routes. Here they have given you example. Domestic Air India is public sector, मतलब ये क्या है? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट होते हैं एयर इंडिया के. Whereas स्पाइस जेट, इंडिगो, these are what? प्राइवेट एयरवेज. ओके, इंटरनेशनल में क्या आता है? कुंटास एयरवे, कतार एक्चुअली होना चाहिए था, ठीक है. क्वांटस एयरवेज लिमिटेड, यस, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर में आता है, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सेक्टर में आता है दिस क्वांटस एयरवेज लिमिटेड. इज दैट क्लियर? सो सम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एयरवेज आर ऑल्सो देयर इन द एयर ट्रांसपोर्ट. Moving towards next is water transport. Water transport means what? Number of ships, boats, steamers, launches, submarines, ships, etc. Go through with the passengers and some goods by waterway. With the help of this means of goods and passengers are carried to different places both within as well as outside the country. So international way को हमें achieve करना हो, if I want to send my goods to out of India, so I can choose for water transport also. I may go for water transport. When the goods and the passengers moved inside the country, it is known as inland water transport. Okay, underline this, objectives में आ सकता है. Inland water transport means when the goods and passengers are moving inside the country, and when the different means of transport are used to carry goods and passenger on ocean or sea route, so it is known as ओशन और सी ट्रांसपोर्ट. ओके, समंदर से लेके जाते होंगे, सो इट इज़ सी रूट.
In India, Ministry of Shipping looks after development of oceans transport throughout the country. Is that clear? So this is what water transport. Next is monorail and metro, ropeway and pipeline. Now monorail and metro, what is that? Okay, it is the in the emerging mode of India, in the emerging mode of economy, okay, energy efficient and less पोल्यूशन स्प्रेड करने वाला जो रेलवे है, सो दैट इज व्हाट मोनोरेल एंड मेट्रो. Okay, so this is new type of rapid transit system which is found in urban areas. Okay, urban area में बहुत कम जगह पर ये मोनोरेल पाई जाती है. एग्जाम्पल मुंबई में भी है. Okay, a monorail is a railway in which the track consists of a single rail or a beam. Okay, एक सिंगल ट्रैक पर ही क्या चलती है, नंबर ऑफ ट्रेन्स चलती है एंड वो भी वन बाय वन. ओके, नॉट एट अ टाइम. The term is also used to describe the beam of system or the trains traveling on such beam or track. From the passenger's perspective, monorail can have some advantage over the other modes such as less intersection turns, no traffic jams, then absence of problem of collision, etc. Okay, why monorail is much easiest way, or we can say that very much फिजिबल इन नेचर, बिकॉज ये नंबर ऑफ ट्रेन्स में रश, मतलब दैट इज़ व्हाट, पोल्यूशन भी कम होता है. ओके, गर्दी भी कम होता है, ट्रैफिक भी कम होता है एंड देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ कोलिजन, दैट इज़ व्हाट, एक्सीडेंट्स भी नहीं हो सकते बिकॉज देयर आर ओनली 1 to 2 ट्रैक्स अवेलेबल. ओके, आने जाने के लिए. एंड द डिस्टेंस दैट मोनोरेल covers, that is also for a short level. Okay, for some of the stations, hardly 10 to 20 stations के लिए ही this monorail provides their facility. Okay, so example of monorail in India is what? Mumbai monorail. Okay, now next is ropeway. Ropeway means what? It is useful for the hill stations, from one hill to another hill. If you want to reach from one hill to another hill, so this distance can be removed by having ropeway system. In ropeway transit, trolleys move on one wheel connected to a rope and are used for carrying passengers or goods. Okay, so एक पिंजरे के जैसा एक क्या होता है, ट्रॉलीज होता है, उसमें आप बैठ सकते हो या फिर गुड्स बैठ सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स आर रायगढ़ रोपवे. अगर आप किसी भी फोर्ट पर जाओ, सो नीचे से लेकर ऊपर तक वो फोर्ट में अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, सो इट इज़ एक्सपेंसिव इनफ, बट दिस रोपवेज आर cheapest form of transportation. And example they have given ropeway of Sonmarg in Srinagar and ropeway of Raigad Fort. एंड ऐसे बहुत सारे रोपवेज आपने बहुत अलग अलग जगह पर देखे होंगे, स्पेशली हिली एरिया लाइक दार्जिलिंग हो गया, देन गैंगटोक हो गया, लाइक दैट. नेक्स्ट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. नाउ यहाँ पर किसको जगह नहीं मिलेगी? इन द थ्रू पाइपलाइन जो वेस्ट वाटर होता है, स्लरी, स्लैवेज एंड जो नॉर्मल वाटर होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है टू द डिफरेंट एरियाज, all those water and the slurry and sewage can be moved or shift through these pipelines. Okay, गैस की पाइपलाइंस भी होती है, वाटर की पाइपलाइंस भी होती है, ड्रेनेज पाइपलाइंस होती है, लाइक दैट. ओके, सो वाइल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स आर यूज फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, petroleum and short distance system exist for sewage, slurry and water, that is what waste water के लिए and normal water के लिए. while long distance networks are used, मतलब पेट्रोलियम के लिए बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस यूज़ की जाती है, like that. okay, so here we have done with our business services chapter. In the next lecture we will start with our new topic, okay, emerging modes of business. So till then, thank you for the day. And just note down all those things in your notebook.